All right. Hello, everyone. So till now we have seen what is the structure of a C program, what is the syntax of a C program. Okay, we have seen the importance of this semicolon. We have seen the different portions of the C program or different components of the C program. We know what are preprocessor directives, function declaration or function initialization, and what is the body of the code. Right. तो अब तक हम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया है. Now we will be looking at one more important aspect of C programming, and that is comments and spaces. Okay. Let's see what are comments and spaces. So to understand what are comments and spaces, we need to understand how the computer reads the code, okay, and how a human reads the code. तो दोनों में बहुत ही vast difference होता है. So imagine the computer as a toddler. Okay, it reads and executes the code line by line and word by word. आप जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है. आप अगर बच्चे को कोई भी स्टेटमेंट सिखा रहे हैं तो आप उसको एक लाइन बाय लाइन समझाएंगे और हर एक लाइन को वर्ड बाय वर्ड समझाएंगे. So the computer भी उसी तरह से कोड को रीड करता है. The computer looks at every word in the code before deciding what step it should take next. Okay. तो हर एक वर्ड के अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर अपना अगला डिसीजन लेगा. ठीक है. अगर आप उसको कहते हो कि you want to print something, so you have written printf, then if the computer reads the printf code, then only it will print something on the screen. So this is how the computer reads the code. As it is evident, the blank space plays a really important role in English language. Okay, तो जो white spaces होती है या blank space हम दो words के बीच में छोड़ते हैं, that does play an important role in English language, but they are usually ignored by the computer while reading code. Okay, तो अगर हम code में white spaces को include कर रहे हैं, the computer will ignore them. Okay, this is because the blank spaces carry no significant importance in the code itself. ठीक है. तो अगर आप कोई ऑपरेटर के आगे ब्लैंक स्पेस का यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज के आगे हम एक ब्लैंक स्पेस का यूज कर रहे हैं तो उस ब्लैंक स्पेस का कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता. तो वी कैन सी ओवर हियर स्टेटमेंट सच एज printf hello world and printf blank space hello world will execute similarly. तो अगर आप printf के बाद में एक ब्लैंक स्पेस भी छोड़ देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. I'll just show you how it works. Okay. तो पहले तो हमारे पास ये प्रोग्राम है. यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, एक हेलो वर्ल्ड और एक माय नेम इज कुंज जोशी. ठीक है. सो लेट्स प्रिंट देम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हियर यू कैन सी हेलो वर्ल्ड और माय नेम इज कुंज जोशी दोनों डिफरेंट लाइंस में प्रिंट हो चुके हैं एट दिस पॉइंट. ओके. नाउ currently we haven't left any blank space over here, but now let's do one thing. Let's add a space bar over here. Okay, and now let's build and run this. You can see it's still running the same way. Okay, hello world और my name is Kunj Joshi ये दोनों हमको मिल ही रहा है. Even if we don't leave these blank spaces, we are getting the same answer, and even if we are leaving these blank spaces, we are getting the same answer. Let me show you one more thing. That let me include more blank spaces. Okay, यहाँ पे हमने तीन blank spaces छोड़े हुए हैं या तीन white spaces छोड़े हुए हैं. Let's run this now. And still it is running the same. Okay, फिर भी इस कोड में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है. This is because that these white spaces are usually ignored by the computer. Okay, so usually this is the syntax that we are following, but still even if we are leaving these blank spaces, these are blank spaces are ignored by the computer while it is reading the code. तो आपने अभी देखा कि even after we are leaving 3 blank spaces in between printf and this first bracket, okay, still it is printing the same thing as it is printing when we are leaving no blank spaces, which means that the blank spaces don't really carry any significant importance. Okay, but then there is once again one another thing, so I'll show you what. But notice that blank space will make difference when it is used to print something on the screen. तो अभी हम अगर कुछ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, then we might want to leave a blank space in something. ठीक है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हम लिख रहे हैं तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक ब्लैंक स्पेस होना जरूरी है. ठीक है. तो अगर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, at that time the blank space will play a significant role. Okay, so statements such as printf hello world and printf hello world will make a vast difference. I'll show you that once again. Okay, so if I am having this, let's say कि मैं सारे ये जो ब्लू कलर के स्टेटमेंट्स हैं या जो डबल कोटेशंस के अंदर के स्टेटमेंट्स हैं, क्या जो मैं प्रिंट करने वाला हूँ उन स्टेटमेंट्स में से मैंने सारे ब्लैंक स्पेसेस हटा दिए. Now let's build and run this, and here you can see
हमारे स्क्रीन के ऊपर जो प्रिंट हो रहा है उसमें कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है, बट इफ आई एम लीविंग स्पेस बिटवीन द टू ऑफ देम, ठीक है, लेट्स से कि ये नेम इज कुंज जोशी जो पूरा है उसमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन माय और इन दोनों के बीच में एक स्पेस छोड़ रहा हूँ, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड हियर यू कैन सी कि जहां पे हमने स्पेस छोड़ा हुआ है हमें एक वहीं पे हमें एक स्पेस मिल रहा है। So to print anything on the screen, the blank space does play a significant role, but when it is used in the code, it will not play any significant role. Okay. Okay. So let's see what we have next. Okay. तो ये हो जाता है blank spaces. Now comes comments. Okay, what are comments? The comments in C language are very important parts of code which are neglected by the computer. Okay. तो आप अभी ये बताएंगे कि आपने अभी तो कहा कि very important parts of code है, but they are neglected by the computer. So what are comments? Comments are basically made by user, made for the user, by the user, but not for the computer. Okay. Let's understand with an example. ये थोड़ा confusing हो सकता है, but let's understand with an example. Okay. So let's say you are learning C programming and coming across a very complex piece of code. ये आपके सामने एक कोड आ जाता है, ठीक है, आपने काफी थोड़ा सी पढ़ चुका है और ये आपके सामने एक कोड आ जाता है, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, ठीक है, आपको कोई भी कोड समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आपको ये कोड समझ में नहीं आ रहा है, सो व्हाट यू विल डू, तो यू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ योर टाइम टू अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ द कोड एंड इट्स मैकेनिज्म एंड हाउ द कोड वर्क्स, ठीक है, तो आप अपने घंटे लगा देते हैं ये पूरा कोड समझने के लिए, ये पूरे 20-21 लाइन का कोड है, आप ये पूरा कोड समझने के लिए अपने पूरे सारे बहुत सारे घंटे लगाते हैं, ठीक है, and then once you're satisfied with your understanding you copy the C code in your IDE and run it and are satisfied. ओके, तो आप अपने जब कोड ब्लॉक्स के अंदर ये कोड कॉपी पेस्ट करके रन करते हैं और आपको जो सेटिस्फाइड आउटपुट मिलता है, जो सेटिस्फैक्टरी आउटपुट मिल जाता है एक बार, तो आप सोचते हैं कि ओके चलो मजा आ गया, ये कोड तो रन हो गया, मगर आपको पता है कि वंस यू हैव कॉपीड दिस कोड, वंस यू हैव रन दिस कोड, मगर अगली बार जब आप इस कोड को देखेंगे तब यू आर डैम श्योर कि आपको ये कोड समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, बिकॉज दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स कोड. ओके, बट यू नो द नेक्स्ट टाइम यू विल ओपन द कोड यू वोंट रिमेंबर व्हाट ईच लाइन डिड, ठीक है, तो अगर नेक्स्ट लाइन अगर आप कोड खोलते हैं और मैं आपको पूछ लेता हूँ कि व्हाट द एथ लाइन डज, ओके, और आई आस्क यू व्हाट द 16th लाइन डज, ठीक है, तो आपको कुछ समझ आया तो आपको उस टाइम पे याद होगा, आपको याद होगा, ये दैट इज नॉट अ गारंटी. ओके, आपने समझ तो लिया था, आपने समझ तो लिया था कि ये कोड उस टाइम पे क्या करता है, बट व्हेन द नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू फ्रॉम बिगिनिंग, आपको ये याद नहीं होगा कि 8th लाइन क्या करता है या 16th लाइन क्या करता है या 17th लाइन क्या करता है, ठीक है, these are just lines of complex code which you are unable to understand. Okay, तो अभी हम इस केस में क्या करेंगे, let's see. So you decide to make a note of what was the use of a particular line of code, so you can understand even the next time you open the code. ठीक है, तो आप ये डिसाइड करते हैं कि एक नोट बना लेते हैं कि 8th लाइन क्या करती है या 16th लाइन क्या करती है या 17th लाइन क्या कर सकती है. As you can see over here in the 13th line, they have given a note to us. Okay, that sim files are fixed size, don't read beyond the end. That does not matter to us कि क्या note दिया हुआ है, but they have given a note. Okay, कि इसके बाद वाला जो 14th line है वो क्या कर रहा होगा. Okay, so इस तरह से इन लोगों ने एक कोड के बीच में ही नोट लगा दिया है. So when the next time you open the code and when the next time you run it, you know what mechanism the code is working on. Okay, and what is the output that the code is giving to you. So this is where comments come into action. Comments are added to code to ensure that a user can understand the code with ease. ठीक है, तो कमेंट्स कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं. यूजुअली कमेंट्स को कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कोड को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू राइट एनी काइंड ऑफ नोट्स और एब्सोल्युटली एनीथिंग यू वांट टू इन बिटवीन द लाइंस ऑफ कोड. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नोट्स ही लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट्स में. ठीक है, आप कुछ भी कमेंट कर दोगे तो आपका कंप्यूटर यूजुअली उसको इग्नोर कर देगा. ठीक है, so comments are ignored by the computer while reading the code. Hence comments are made for readability of user, not the computer. I think so that is pretty much clear कि आप जिस तरह से sticky notes लगाते हो, ठीक है, आप जब समझ रहे होते हो और आपको टेक्स्ट बुक में कुछ समझ में नहीं आता तो आप एक स्टिकी नोट लगा देते हो उसको एक्सप्लेन करते हुए. So the next time when you read it, you know what this thing means. So comments are like sticky notes. Okay, comments are basically sticky notes for your code. Okay.
I'll show you how the comments work. Okay, but first of all, we need to understand how comments are written. So there are two formats of comments: single line and multi-line comments. Okay. As the name suggests, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है. तो सिंगल लाइन कमेंट्स होता है कि इस तरह के कमेंट्स जो एक ही लाइन में डिस्क्राइब्ड हो, और मल्टी लाइन कमेंट्स उस तरह के कमेंट्स होते हैं जो एक से ज्यादा लाइन में डिस्क्राइब्ड हो. ठीक है. तो I'll show you what we mean by single line and multi line comments. Okay. So here let me add a name and let me add a comment. printf क्या कर रहा है, जो फर्स्ट printf फंक्शन है वो क्या कर रहा है. ओके, एज यू कैन सी कि मैं जैसे ये डबल स्लैश कर रहा हूँ, ये डबल स्लैश से हम सिंगल लाइन कमेंट देते हैं. जैसे मैं डबल स्लैश कर रहा हूँ ये ग्रे हो जाता है. ठीक है. नाउ लेट मी ऐड अ कमेंट की printf function in the 7th line is used print hello world. ठीक है. ये आप देख सकते हैं कि एक कमेंट एकदम लाइट ग्रे कलर में आ चुका है. ये अगर मैं ये दिख नहीं रहा, नो प्रॉब्लम. आपको आई होप सो कि ये दिख रहा होगा. सो द printf function in the 7th line is used to print hello world. ये कमेंट बन जाता है. ठीक है. This is going to be ignored by the computer. This is for the readability of the user. ठीक है. आप जब अगली बार ये कोड खोलोगे तो आपको 6th लाइन पे ये जो कमेंट होगा वो आपको दिख के ये पता चलेगा कि ये printf function in the 7th line is used to print hello world. तो 7th लाइन में जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है ये आपको 6th लाइन देख के पता चल जाएगा. ठीक है. When I am running this code, you can see कि इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है. जो पहले आउटपुट आ रहा था वही आउटपुट आ रहा है. But what happens when I do this? Okay. What happens when I remove the two statements or the two slashes that were used to create the comment? Okay. And when then I run it, you can see that this is an error. Okay. ये एक error दिखा रहा है हम लोगों को. What's the error? Because none of this is defined. Okay. printf शायद अभी भी defined हो, but still we are not following the syntax. Our C is case sensitive. Okay. So we are not following the syntax over here. printf क्या होता है, function क्या होता है भाई, in क्या होता है, the क्या होता है, ये सब कुछ भी हमारे C के कोड को हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है. Okay. It can understand what is written in the 7th line. It can understand what is written in the 8th line. It can understand what is written in the 5th line. मगर 6th line कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रही. But as soon as I do this, and then when I run, the code runs pretty quick. Okay, the code runs pretty well. All right. So these are single line commands. Single line commands are limited only to a single line. ठीक है. अगर मैं next line में ऐसा लिख देता हूँ कि hello world. Okay, then you can see it is not commented. Okay, it is coming in black, which means that it is not commented. Okay, it will be read by the computer when I would run the function or I would run the code. You can see we are getting an error over here. So that's basically what I wanted to show you. Okay, single line comments are limited to only to one line. Okay, now let's see what are multi-line comments. Okay, multi-line comments हमारे पास multi-line comments में ये फायदा रहता है कि मल्टी लाइन कमेंट्स कैन एक्सपांड ओवर वन लाइन. ओके, व्हाट डज दैट मीन? हो सकता है कि आपको कोई पैराग्राफ बीच में इंसर्ट करना हो. ठीक है. हो सकता है कि यू डोंट वांट टू लिमिट योर कमांड ओनली टू वन लाइन. देन इन दैट केस वी विल यूज द मल्टी लाइन कमांड्स. और मल्टी लाइन कमांड्स का सिंटैक्स होता है यूज द बैकस्लैश. ओके, यूज द स्टार एंड यू कैन सी इट इज ऑल कमेंटेड. जो नीचे कोड लिखा था वो भी कमेंट हो गया. ठीक है. दैट डज मीन्स कि जो मल्टी लाइन कमेंट है ये जहां तक हम एंड नहीं करते वो सब कुछ कमेंट कर देता है. ओके, हमारा कोड को भी कमेंट कर देता है वो. सो लेट्स राइट printf function after this comment is used to print my name. ये मैं लिख देता हूँ. ठीक है. बट ये अच्छा नहीं लग रहा. मेरे को लग रहा है कि एक लाइन के लिए बहुत बड़ा हो जाता है. So let's just press and enter. Okay, and over here I will finish the comment. Okay, जैसे ही मैं ये syntax लिखता हूँ, ठीक है, a slash followed by star and a star followed by slash. Okay, to end the comment. आप देख सकते हो कि सिर्फ इतना ही ग्रे रह जाता है और बाकी सब बैक टू नॉर्मल कोड हो जाता है. ठीक है.
as soon as I run it, it also does not affect my code anyways. Okay. अच्छा, ये भी ऊपर मैं समझा देता हूँ कि this is for build, this is for run and this is for build and run. So अगर आप कोई भी change लाते हो अपने कोड में, then always do a build and run. Okay. So उससे आपके सारे changes अपने आप ही सेव हो जाते हैं. Okay, back to the topic. तो comment आप देख सकते हो कि comment always is not read by the computer. Okay. C में comment कभी भी computer read नहीं करता है. If I remove this, then even my code is getting commented. Okay. And if I'm adding this, then my code is back to normal. Only the statement that I have written is getting commented. Comment के दो types होते हैं, single line और multi line comments. उन दोनों के syntax मैंने आपको explain कर दिए. I hope everything is clear. Also, yes, one thing, you don't need to add semicolons to end the comment. क्यों नहीं add करना होता? Because semicolon is added for functions which are read by the computer. ये comment computer read ही नहीं करता, तो semicolons की जरूरत ही नहीं पड़ती. Okay, I hope so everything is clear. See you in the next class. Thank you.